I've just parked my car and you'd think I'd park it in a parking lot on a ground, but I'm actually about 7 to 8 stories up in the sky, around 65 feet from the ground and in the air right now. How does this parking lot work? Well, if you ask me, I'm gonna have to show it to you. This is a space of total 6 cars, but it holds up to 30 cars in total. It's right in the center of Lahore and it's a marvel in its own. The place is about 2,000 square feet and where you'd probably take a lot bigger space to park these 30 cars, this space is only about 6. What you do is you park your car and this elevator picks you up, takes you to an empty spot in these slots and you just drive into it. You just drive your car, park it there, come down like a normal elevator. And this is all happening in Lahore. हमने जो पार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसका नाम है रोटरी पार्किंग सिस्टम, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक है एसयूवीज़ के लिए और दूसरा है सेडान्स के लिए। जो सेडान वाला मॉडल है उसमें आप 18 कार्स पार्क कर सकते हैं और जो एसयूवी वाला है मॉडल उसमें आप 14 कार्स पार्क कर सकते हैं। ये जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड है। इसको मैन्युफैक्चर हम खुद करते हैं, फैब्रिकेट भी हम खुद करते हैं। हमने इसको डिफरेंट जगहों पे लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने लाहौर में काफ़ी दिए हैं पार्किंग सिस्टम्स, इसके अलावा फैसलाबाद में इंस्टॉल्ड हैं, बाकी पाइपलाइन में हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इंशाल्लाह देंगे इसको। In a city like Lahore, where hundreds of thousands of cars move on the roads every day, making the roads signal free is one thing and a step in the right direction. But parking them is a separate thing, and I believe systems like these are gonna make a huge difference.